So good morning friends, welcome to Raj Malhotra IAS. So guys, we are just about to start the session. Let me upload the PDF for today's session. Just give me a minute. So we are about to start the session here. I'll upload the PDF. Just give me a minute. Okay. So you can join our Telegram group and we'll provide the PDF to you. So we are just about to start. So guys, we have taken new initiative regarding Business Line newspaper. So important articles from Business Line will also be covered. And in the evening we are going to have that session. So you can join that session as well. If you people support that particular session, then we will continue it. Okay. अगर अच्छा आपका सपोर्ट मिलेगा तो वो हम कंटिन्यू करेंगे. अदरवाइज if there is no support from the student side, टीचर्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं. So here we are. Let's see. Okay, so sufficient number of people have joined us. Let's start the session. So let me wish Anand, Mohit, Muskan, Rishi, Raju, Pranjal, Yashwini, Ankit, Piyush, good morning all. Okay, sir, time क्या है? Time तो है अभी 9 AM. So it takes, see guys, there is always a lag of 3 minutes. Okay, so जब मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ और एंड इट विल बी विजिबल ऑन योर स्क्रीन, देयर इज अ गैप ऑफ 3 minutes. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीजन. वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर फॉर अस इन टुडेज न्यूज़पेपर. देखते हैं आज की अखबार हमारे लिए क्या खास लेके आई है. सो हियर वी आर. Now you need to understand one thing here. Now government to wait for expert view on booster dose jabs for the children. Still there is no clarity. We are still waiting for the experts point of view, and it should be done in that way only. Okay. जब एक बार experts बता देंगे, then only we will be moving ahead with the like this vaccination thing. Other point is that this omicron, like that is omicron that is there. Okay, so there is not much information regarding it. तो यहाँ पे अभी तक हमें पता नहीं है कि ये कितना खतरनाक है, क्या है, कैसे है. So scientists are saying that they will require 2 weeks, okay, to come out with some conclusion. And देखिए, when you talk about biological sciences, so 2 weeks is a very less time. Okay, so it means that they are really working hard, and within 2 weeks things will be clear whether this particular variant is dangerous for us or not. Okay, is fatal for us or not. Apart from that, we will also come to know that ये चीज आप बताएं कि we will also come to know whether uh, एनी वैक्सीन विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट दिस और नॉट. कोई वैक्सीन हमारी कैसे इफेक्टिव होगी वो भी हमें पता लग जाएगा. प्रेजेंटली देर इज वन पॉजिटिव न्यूज रिगार्डिंग द कोवैक्सीन. ओके, सो दे आर सेइंग दैट कोवैक्सीन इज समहाउ इफेक्टिव अगेंस्ट दिस वेरिएंट. कोवैक्सीन इस वेरिएंट के लिए जो है एक इफेक्टिव होगा. बट देर आर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कोवैक्सीन हैज अ इशू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज इट इज बीइंग मेड बाय वीक वायरस. ओके, कि वीक वायरस एक तरीके से उठाया जाता है. इट इज बीइंग मेड बाय अ वीक वायरस, वीक कोरोना वायरस, एंड आफ्टर दैट वी आर वर्किंग ऑन इट. वी आर ट्राइंग टू मेक एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी. ओके, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज वीक वायरस से बनती है. The problem is that to have co-vaccine for such a large population, it is going to be difficult because the process of making co-vaccine is more complex than the Covishield. Covishield से ज़्यादा complex process होता है co-vaccine को बनाने का. So that's why it will be a challenge for us. Okay, so we have to still wait and watch क्या होता है, government क्या step लेती है. So other than that, government seeks 62,000 crore to clear Air India debt. Okay. Then there is another news regarding center has sourced 25,000 crore as additional fund for MG Narega.
So presently this is the situation going on. Okay, so uh, let's look into things in detail. So I am telling you, in the evening we are going to be there at 7 p.m. Okay, 7 p.m. पे हम लोग जो है वो आते हैं. There is a daily session that we have started from last 2 days. Okay, in that we cover business line newspaper. So here we are starting right now. Now government seeks 62,000 crore to clear the Air India debt. Okay, so we know that Air India was an elephant in the room. Guys, look at this particular amount. So like taxpayers will be paying a total of 62,000 crore for debt and other liabilities of Air India. सो दिस इज व्हाट इज देयर इन इट. ओके, ये एक एडिशनल चीज है जो आपको यहां पे समझनी होगी. 62,000 करोड़ का डेट था. नाउ देयर वाज अ डिबेट वेदर इट वाज राइट डिसीजन टू प्राइवेटाइज एयर इंडिया. It was right decision to privatize Air India. So this is the debate that we have to look into. Now the point is that some of you must be saying that Air India was a, say, national symbol. Okay, it was a national symbol, and during the crisis situation, in the sense that during the, you can say, disaster management activity, evacuation activity. So wherever we have carried out evacuation, हमारे हमने अपने लोगों को जहाँ से बाहर निकाला है, वेस्ट एशिया से, मिडल ईस्ट से, एयर इंडिया प्लेन्स वर यूज्ड. ठीक है ना, एयर इंडिया के प्लेन्स जो है वो यूज किए गए थे. नाउ व्हाट हैपेंड, व्हाई एयर इंडिया फेल्ड, व्हाट इज द रीजन व्हाई एयर इंडिया फेल्ड. ओके, so you need to understand one thing here. Nitin Gadkari, he make one statement that government has no business to do business. Okay, government has no business to do business. कि government का काम business करना नहीं है. The role of the government is to regulate it. Role of the government is to facilitate it. Facilitate करना है और regulate करना है. For regulation we have something called Civil Aviation Authority of India. Okay, Civil Aviation Authority of India is there. Then you have Airport Authority of India. ठीक है ना. So आपके पास ऑलरेडी रेगुलेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, दे आर फंक्शनिंग फाइन. ओके, वो तो हमारे पास है. अदर थिंग इज दैट मोदी गवर्नमेंट सेड दैट द फोकस इज ऑन मिनिमम गवर्नमेंट, ओके, मैक्सिमम गवर्नेंस. Minimum government, maximum governance. Now can we say that if we strengthen Civil Aviation Authority of India or Airport Authority of India, okay, give them more powers, so can we say that it is in line with this particular vision that you reduce the size of the government? अब Air India was already सब सरकारी, so government has reduced the size of Air India. उसका size हमने कम कर दिया उसको प्राइवेटाइज करके. ओके, मिनिमम गवर्नमेंट हो गई. गवर्नेंस मैक्सिमम कैसे हो जाएगी? वी हैव दिस एजेंडा. मैक्सिमम गवर्नेंस के अंदर यू हैव मल्टीपल प्लेयर्स. ओके, multiple players who will be regulated by powerful government institutions. This is the point here. Now other than that, there is another argument which says that this debt of 62,000 crore, 62,000 crore ka debt, okay, now this amount could have been used on social security schemes. आपका ये अमाउंट सोशल सिक्योरिटी के ऊपर लग सकता था. ओके, वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर लग सकता था. So these were the other areas that we could have strengthened by doing this. Okay, but as there was a debt, 62,000 crore का उधार हुआ, and like this is a problematic thing. So in future we don't want such things to happen. We don't want this debt to exceed further. That's why government took the decision to privatize it. Okay, otherwise ये debt और बढ़ जाता और सरदर्दी होती. Your for future investment in social security schemes would have been impacted. क्योंकि पैसा तो टैक्स पेयर का है, कहाँ लगाना चाहते हो, it is up to us. Okay, so that's why whatever this government is doing by privatizing Air India, it is a right step. Okay, बिल्कुल सही step है ये. ठीक है ना, there is no doubt about it. So right now government has sought that parliament's nod is required. Okay, like to deal with this 62,000 crore debt. ये उधार था इनका, अब इसको बेचने से पहले पुराना उधार तो चुकाना पड़ेगा. That's why government is asking for taking permission from parliament. Now why this is being done? Why this is being done? Okay, so we have something called rule of law, and who makes the law? Parliament makes the law. Okay, and in India we have a democracy. सब कुछ democracy के अंदर होता है. And when you have a democracy, it means that everything should be known to people. जनता को पता लगना चाहिए. Okay, and people send their leaders
to parliament. So you need to understand one thing, that's why government is asking permission from them. इसलिए उनसे परमिशन लेके ही ये स्टेप लिया जा रहा है, एंड देर आर चांसेस दैट दे माइट कम आउट विद द लॉ, एक कानून भी लेके आएंगे एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने के लिए. ओके, सो दीज आर द डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस राइट नाउ, एंड इट्स अ गुड स्टेप दैट गवर्नमेंट इज डूइंग. ओके, सो विल टेक अनदर न्यूज. सो चलिए, no proposal to ban NSO groups. This is what NSO group, this is what government is saying. Okay, so this is the same NSO group which was selling Pegasus software to the government. Okay, तो ये NSO group वो group है जिन्होंने Pegasus software जो है वो दिया था सर्विलेंस करने के लिए. So right now there is no plan to ban it because पता नहीं है क्या लिया था गवर्नमेंट ने deliberately to carry out surveillance and all, but there is no point of banning it out. They provide state of the art technology and we need it for other reasons. Okay, surveillance तो गवर्नमेंट ने की है, for that definitely actions should be taken, but that company should not be banned. That's the point here. So we'll move to the next part now. Now, implement panels anti-pollution steps, Supreme Court to center Delhi government. Okay, the Supreme Court is saying that these are the suggestions given to us. Okay, Center's Air Quality Commission has come out with some ideas. So one of the idea is coming out with enforcement task force. Okay, that whatever suggestion has been given, what is the progress on that, that will be made sure by enforcement task force. किस तरीके से steps लिए जा रहे हैं, for that we all should know what government is doing. This is the time of crisis. हमें भी मालूम होना चाहिए कि क्या चल रहा है वहां पे. That's the important point here. Okay, now you need to understand there are some steps that are to be taken by the government. बात इतनी आसान नहीं है. We have already covered that without the support from Haryana and Punjab, okay, we cannot deal with this crisis because stubble burning primarily happens in this part. Okay, बहुत बड़े level पे होता है, and we have already seen that big problem is that within 20 days 2 states are burning. Okay, within the span of 20 days 2 states are burning. That's the major trouble here, and we know that how the 20 days data came, because this farmer, they have to prepare their land for the rabi crop. सर्दी की crop के लिए तैयार करना पड़ता है, wheat का season आने वाला है, ठीक है ना. So they don't have much time, 20 दिन बचते हैं, which is the fastest way, burn the left outs. Okay, जो पैडी के left outs है वो जला दो. This is how it creates trouble that Delhi is choking. Okay, now what can be done for this particular thing? One thing you need to understand, government have to provide subsidy to farmer for buying this turbo happy seeder. Okay, which is a machine mounted on a tractor that cuts and uproots the stubble. एक तरीके से उसका एक पैक बना देते हैं, and that pack can be sold in the market. This is one way. Other thing is that we have to explore ways. Okay, explore ways from where the stubble can be used for ethanol production. इसको सड़ा के, इसको फर्मेंटेशन करके इसका इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं. That's the other thing that we have to do. Now it's a very good suggestion. Ethanol, we already have a program to blend our petrol. पेट्रोल को blend करने के लिए इथेनॉल का already use हो रहा है. Okay, so the point here is that this is other thing that we can do. ठीक है ना. Apart from that, you have to reduce, you have to work on the vehicular pollution as well. Now introduce BS6 vehicles, okay, which are more efficient, काफी अच्छे efficient होते हैं, like emissions are relatively less, engines are new. This is what we can do. Replace them with the electric vehicle. Now this is the area where government is focusing. So even yesterday Nitin Gadkari, like he made this statement, he is very proactive on this idea that electric vehicle, they have to replace the diesel vehicle, or you can say fossil fuel run vehicle. So this is what we have to do. This is what we have to do. Apart from that, other suggestion could be temporarily odd even scheme can be there. Okay, it can be implemented. Now again, all these things will be done and they will be successful if there is people participation. जनता पार्टिसिपेट करेगी तभी सब कुछ सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे. ओके, दैट्स द पॉइंट हियर. So already government has taken some steps like construction of highways. Okay, we know that how eastern and western peripheral way now they have been constructed and they are working fine. Okay, काफी अच्छे से वो काम कर रहे हैं, थोड़ा ट्रक का पोल्यूशन कम भी हुआ है. But look at the number of cars that Delhi have, number of two-wheelers that Delhi have. Okay, that's the major problem.
अब कार और टू व्हीलर की प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक श्योर दैट car or you have to make sure that your public transport should be strengthened. Okay, public transport सबसे important चीज है यहाँ पे, ठीक है ना. This thing should be done. Public transport is the key if you want to remove cars from the road. This is the point here. Other thing is that like already we are implementing graded response action plan. Okay, but I guess it is not effective. मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा effective नहीं हो रहा है. Construction activities have been banned in Delhi. We know this particular fact. So all these things are done here. Now other important thing for your prelims. Okay, now this information is important that air quality index, it covers which all pollutants. Air quality index के अंदर कौन से pollutants cover होते हैं. So this is what you have to note. ये आप अलग से note down कर लेना that here we have PM 2.5, PM 10, ammonia, lead, nitrogenous oxide, sulfur dioxide, ozone, carbon monoxide. Okay, so these are the pollutants which are covered in दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स. तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, ठीक है ना. सो दीज आर द स्टेप्स दैट वी हैव टू टेक. अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू फाइंड द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. अब देखो हरियाणा पंजाब से हेल्प के बिना आपकी बात बननी नहीं है. ओके, एंड येस्टरडे आई प्रोवाइडेड वन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लॉ इन हरियाणा एंड पंजाब. उनका स्टेट लॉ है हरियाणा और पंजाब का. ओके, दैट द सोइंग ऑफ पैडी कैन नॉट बी डन इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे. नाउ दिस कैन बी रिवाइज्ड एटलीस्ट बाय 15 days. अगर हम 15 डेज भी इसको आगे कर देंगे, इट कैन प्रोवाइड सम रिलीफ. ओके, दैट यू कैन मेक द अरेंजमेंट दैट बाय 15th फ्रॉम 15th ऑफ मे द सोइंग कैन स्टार्ट. ओके, कि आप सो करना स्टार्ट कर दो बाय 15th ऑफ मे. इट मींस दैट हार्वेस्टिंग विल आल्सो बी शिफ्टेड बाय 15 डेज. ओके, सो एट दैट टाइम द स्पीड ऑफ विंड इज रिलेटिवली हाई, काफी अच्छी हवा चल रही होती है, एंड देयर आर चांसेस दैट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. ये चीज भी हम एडिशनली सजेस्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव इन द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली. नाउ विल मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन. देखेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे. ओके, सो केजरीवाल फ्लैग्स ऑफ ट्रेन टू अयोध्या. सो लाइक ही इज गोइंग देयर. दिस इज ऑल पॉलिटिक्स व्हिच इज बीइंग डन. ओके, सो let's move to next part now. Let's see what exactly is there. So like look at this statement that city's air quality improves to very poor level. Okay, that from severe it has become very poor. That's the situation right now. अब आपको very poor भी अच्छा लग रहा होगा. Okay, the very poor is also appearing to be fine for the people. That's the point. Now this is what is happening here. Other than that there is nothing much. कुछ खास नहीं है. Okay, so here we are moving towards our editorial section. Let's see what exactly is there for us. Okay, so वो चीज हमें देखनी है यहाँ पे. Now so okay, चलिए. So here we are. Now COP27 in Egypt must focus on food system. Okay, so there they are talking about few things. Presently COP26 is done. Okay, conference of parties regarding climate change, COP26 is done. Now next year we are going to have this COP27. So they are linking one thing, that your poverty, your food security, okay, poverty, specifically food security, is somehow linked with the climate. ये सारी चीजें क्लाइमेट के साथ लिंक्ड हैं. बिकॉज इफ देर इज क्लाइमेट चेंज, ओके, इफ देर इज क्लाइमेट चेंज then it is going to impact the food security. क्यों food security कैसे impact होगी? Because scientists are saying one thing, that climate change will lead to reduction in productivity. आपकी productivity जरूर कम होने वाली है. Okay, now if there is reduction in productivity, if there is soil degradation which is already going on, और ये increase ही होगा, कम तो नहीं होगा, increase ही होने वाला है. So in this scenario food security can become a major crisis. Apart from that, you need to understand, we already know one thing, COVID has highlighted the issues which are there in the society. Okay, so one thing is that inequalities are already there, inequality already है. Okay, so in the time of say climate change and pollution and all, this inequality may also increase, वो भी बढ़ जाएगी. क्यों? Why I am saying this particular point? See, people who can afford clean that air purifier, okay, जिनको घरों में लगता है air purifier, who can afford it, they will buy it. Again there will be a issue of haves and haves not.
जिनके पास होगा और जिनके पास नहीं होगा, जिनके पास नहीं होगा देयर सिचुएशन विल फर्दर डिटीरियोरेट, उनकी हालत और खराब होती जाएगी. ओके, सो दिस इज हाउ इट विल ऑल्सो इंक्रीज द इनइक्वालिटी विच इज ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. Now, considering all these things, it is important that we have to address poverty as well as the food security to deal with the future crisis. Okay, so this editorial says few things, that we have to work on climate change adaptation. Okay, there are talks that you have to make your agriculture climate resilient. आपकी agriculture को आपको climate resilient बनाना पड़ेगा. There are multiple ways. Okay, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा रेजिलियंट वेज, एंड वन ऑफ द सोल्यूशन इज दैट यू यूज द जीएम क्रॉप्स. आप जीएम क्रॉप्स यूज करोगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. दिस इज वन एरिया दैट वी हैव टू फोकस ऑन. ठीक है, इसका आप यूज करोगे. अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, there are other efforts that are to be done, like bringing in the element of clean technology. जहां जहां पे भी पॉसिबल हो, इवन इन योर मैन्युफैक्चरिंग यू हैव टू कम आउट विद द क्लीन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, ओके, रिन्यूएबल एनर्जी. दोज आर द थिंग्स दैट आर टू बी डन. नाउ देर इज वन थिंग, दैट दिस स्कोप 26 इट फेल फार शॉर्ट ऑफ अ ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस many had hoped for. There were some successes, there is no doubt about it. थोड़ा बहुत सक्सेस तो हुआ है रिगार्डिंग द फंडिंग. बिना पैसे के कोई एफर्ट नहीं मारा जाता. ऑन द say issue of funding, some effort has been made. Okay, but right now this is the issue that is still longing, and it will be difficult activity. Okay, so challenges are there, and one of the challenge is the interlinking of climate crisis and hunger. Okay, interlinking of climate crisis and hunger. Now I'll take this to next level. Next level is that already we have hidden hunger. हम अभी भी हिडन हंगर की समस्या के साथ डील कर रहे हैं. ओके, हाउ इट इज हिडन हंगर? डेफिशिएंसी ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ओके, डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हमारे अंदर नहीं होती है ऑलरेडी. वी आर ऑलरेडी डीलिंग विद दिस. सो इट मींस दैट इट इज गोइंग टू फर्दर एग्रेवेट. जब आपके पास फूड ही नहीं होगा खिलाने के लिए, तो ये तो समस्या बढ़ने वाली है. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. ठीक है ना? सो देयर आर सम एस्टिमेट्स व्हिच सेज दैट बिकॉज ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक द नंबर ऑफ people, vulnerable people have doubled. Okay, so earlier there used to be 130 million people who were dealing with chronic hunger. Right now it has doubled to 270 million people. Okay, near about 27 crore people. Okay, they are facing the issue of chronic hunger right now because of the COVID crisis. Further, it is stated as per the United Nations World Food Program that if there is 2-degree rise, then it will further add 189 million additional people. ये सारे के सारे लोग जो हैं अब वापस chronic hunger की ट्रैप में आ जाएंगे. What it shows that you have to deal with this in a multilateral way. You have to make sure that there is subsistence agriculture, fishing, livestock. Okay, all these things are to be addressed. सिर्फ agriculture से बात नहीं बनेगी. These areas are also critical and you have to work on them as well. This is also our focus. ये भी हमारा फोकस होना चाहिए. ठीक है ना? So ये सब चीज कलेक्टिवली मिला के हम जो है कुछ स्टेप ले पाएंगे. Now you need to understand one thing. According, like across the world, up to 811 million people do not have enough food as per the recent estimates. Okay, poor and the vulnerables, they continue to be hit hardest. बहुत ज्यादा उनको नुकसान होता है. ठीक है ना? So other reality is that the top 10 most food insecure countries, they contribute just 0.08% of the global carbon emission. What it shows that rich countries, okay, rich countries, they are not facing this issue. उनकी कोई food security का issue नहीं होता, but they are responsible for the carbon emission. Rich countries carbon emission के लिए responsible है because they carried out industrial revolution first. सबसे पहले इन्होंने ही तो industrial revolution start किया है. Since then this emission is going on. तब से लेके अब तक emission चल रहा है. But who is paying the price? Poor nation are paying the price. Okay, गरीब जनता जो है प्राइस पे कर रही है. That's the point here. That's the critical point here. So there are issues like crop failure, water scarcity, nutrition is declining. Okay,
सो दिस इज द मेजर एरिया दैट वी हैव टू फोकस ऑन. क्रॉप फेलियर हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है? गरीब जनता के बीच में. द रिच कंट्रीज दे आर नॉट इफेक्टेड, वो ज्यादा इफेक्टेड भी नहीं है, दे हैव द रिसोर्सेज. अगर कुछ गड़बड़ भी होगी तब भी रिच कंट्रीज विल बी हैविंग सम रिसोर्स, उनके पास रिसोर्स होगा. लेकिन इंडिया जैसे कंट्री का कुछ नहीं होगा. ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. सो वी आर इन अ डिफरेंट सिचुएशन देन देम. वी कांट इक्वेट आवरसेल्फ विद दीज रिच कंट्रीज. दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. ठीक है ना? सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग लाइक क्लाइमेट रेजिलियंट कम्युनिटीज. कम्युनिटी को भी ऐसे पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा आपको, पूरी ट्रेनिंग देके. देन रेजिलियंट एग्रीकल्चर, this is also what we have to do. Okay, now the focus though has been on reducing emissions and targets related, as these are essential to protect livelihoods and the food security of millions. Okay, ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको, क्लाइमेट चेंज को रोकना पड़ेगा. दिस इज द पॉइंट दैट दे आर मेकिंग. इट वॉन्ट बी इजी बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट एरियाज. ओके, इंटरनेशनल सपोर्ट, you need cooperation at the international level, at the level of UN. You have to make arrangement for finance, capacity building. You have to make sure that you have the capacity to implement these measures. भाई आपके स्टेट के अंदर भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए. पता लगे आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रिपेयर्ड ही ना हो. Am I right? Because municipal corporation, if they are not prepared, how will you implement the change? अच्छी चीजें आप implement कैसे करोगे? Okay, so capacity building, technology transfer, adaptive capacity, okay, resilience, all these things are required, and this is what we have to do. Now for that we are announcing something called the national adaptation plans. Okay, world over countries are announcing it, they are coming out with policies. In India's case, at the state level as well, we need some action. सिर्फ सेंटर शोर मचाएगी, ये करेंगे वो करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. एट द स्टेट लेवल ऑल्सो यू हैव टू मेक सम अरेंजमेंट, यू हैव टू हैव सम मेजर. ओके, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. नाउ देयर इज अनदर एरिया, वट एवर चेंज दैट यू वांट टू ब्रिंग, देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट. पैसे लगेंगे उसके लिए, ठीक है ना? बिना पैसे के कुछ नहीं होता है. सो हियर दिस इज ऑल्सो द एरिया. So either we can make contribution to adaptation fund, or there can be another fund which can be formed, the least developed countries fund. Okay, to have this arrangement. There are multilateral banks which are working. They can be used. They can be used for funding of these projects, green projects. Okay, ग्रीन प्रोजेक्ट लेके आ सकते हो आप. कंपनीज कैन कम आउट विद ग्रीन बॉन्ड्स. ओके, ग्रीन बॉन्ड्स का कंसेप्ट भी काफी पॉपुलर हो रहा है. ठीक है ना? एक अपना अपना बॉन्ड निकाला है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी निकाल सकती है ग्रीन बॉन्ड, इंडिया के अंदर कंपनीज भी ग्रीन बॉन्ड निकाल सकती हैं. सो दीज आर द अदर सजेशंस दैट वी हैव. ठीक है, बट आपको ये करना तो पड़ेगा. विदाउट डूइंग दैट देयर इज नो अदर वे. So this is what we have to do here. Okay, now adaptation needs are increasing every day. So whatever needs are there right now, it may further increase. Okay, so developing countries, they already need 70 billion for adaptation. This is what is stated right now. Okay, but this is going to increase further by say 300 billion a year. आज की डेट में वो कहते हैं कि 70 बिलियन की जरूरत है. Already they have announced something called 100 billion contribution by these developed nation. 100 बिलियन का कंट्रीब्यूशन डेवलप्ड नेशन करेंगे. ओके, एवरी ईयर, एंड इट इज गोइंग टू बी फर्दर इंक्रीज टू 300 बिलियन. ऐसा करना ही पड़ेगा, रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है. सो दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन राइट नाउ. बट कैन वी ट्रस्ट दीज डेवलप्ड नेशंस? क्या आप इन डेवलप्ड नेशंस को ट्रस्ट कर सकते हो? आई होप यू आर फॉरगेटिंग वन थिंग. डोनाल्ड ट्रंप, ही यूनिलेटरली टुक यूएस आउट ऑफ द डील. खुद ब खुद यूएस को पेरिस डील से बाहर ले गए थे ट्रंप साहब आते ही. Now in this particular time, with these particular type of leaders, can we trust the western economies? This is the fundamental question. Okay, कितना आप ट्रस्ट करोगे ये आपको देखना होगा. At the India's end, there are few key areas and measures that you have to focus on. Now these are the important ones because this will be forming your answer. Okay, आपके आंसर में यही बनेगा कि इंडिया क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए. Now first thing that is being stated, that creating resilient livelihoods and food security solutions by promoting and improving livelihood of the vulnerable communities. Okay, you have to make sure that their vulnerabilities should be reduced, their threat should be reduced. उनका threat कम होना चाहिए. ठीक है, उनकी vulnerabilities कम होनी चाहिए. This is what is required. Other area is adaptation of climate resilient food crops such as millets for nutritional security. Now this is the other area that we have to focus on. अब millets उगाने का फायदा क्या होता है? They consume less water.
भाई पानी की कमी भी हो जाए तो कम पानी में उग जाते हैं. अदर फोकस शुड बी ऑन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. ओके, सोइल की हेल्थ के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. It is very much required. Okay, so this is the other area that we have to focus on. Other suggestion is that enabling women's control and ownership of production process and assets and increased value addition and local solutions. Okay, so it is stated that women should be at the center of whatever steps you are taking. Okay, जितने भी आप मेजर ले रहे हो वुमेन को ध्यान में रख के वो मेजर लेने हैं. Promoting resilient agriculture sector by creating sustainable opportunities like access to finance, innovation for smallhold farmers. Okay, uh, like information should be percolated time to time, again and again. उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है. व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर द न्यू मेथड्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, साइंटिस्ट क्या रिसर्च कर रहे हैं. ओके, यू हैव टू लिंक द यूनिवर्सिटीज विद द फार्मर्स. यूनिवर्सिटी को आपको फार्मर के साथ लिंक करना पड़ेगा. अदरवाइज होता क्या है, यूनिवर्सिटी में रिसर्च चलती रहती है, फार्मर को पता भी नहीं होता. This is the factual thing. I can tell you about this thing. Okay, so I am from Hisar. Hisar has Haryana Agriculture University. Now this is the problem. HAU is carrying out research. Haryana Agriculture University research कर रही है, लेकिन फार्मर को पता ही नहीं है कि नए मेथड्स आ गए हैं. न्यू सीड्स आर अवेलेबल. ओके, नए मेथड है, न्यू सीड्स आर अवेलेबल. They have no idea about it. So this is the problem that we face. Okay, so whatever information, knowledge that our scientists are producing, you have to share it with farmers. ये करना बहुत जरूरी है. Other is that build capacity and knowledge of civil society and government. Okay, so it is important that civil society participation should be there. ये चीज करनी बहुत जरूरी है. ठीक है ना. विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल यू कैन नॉट अश्योर द सक्सेस ऑफ efforts that you are making. Okay, for doing all these things we have to reimagine the food system. Whatever food system that we have, you have to reimagine it. सब कुछ आपको करना पड़ेगा. Okay, so this is what has been suggested here. Now we will move to the next editorial dealing with education institutions in India. Okay, so you should know about this particular thing, that a new system has been introduced to rank these institutions. Okay, so higher education institutes को हम लोग जो है rank करेंगे. Okay, so these HIEs are ranked. Okay, they उनकी ranking होती है, but right now this editorial is saying that this is unfair to rank. Okay, क्यों अनफेयर है, किस तरीके से अनफेयर है रैंकिंग लेके आना. बिकॉज द पैरामीटर्स दैट आर बीन डिसाइडेड, जो आपके रैंकिंग के पैरामीटर्स हैं, ओके, सो दे आर somehow wrong and biased. वो wrong है और biased है. क्यों biased है? You need to understand. First thing this editorial is making, that in India we have some central universities, okay, then you have state run universities, and then you have private universities. Now one thing is for sure, private university definitely the fees is relatively high. इनकी फीस ज़्यादा है, and if as they are charging high fees, they are sustaining their activity. ज़्यादा फीस चार्ज करके वो अपनी एक्टिविटी सस्टेन करते हैं. Then you have central and state universities, okay, institutions. Central institutions, they receive a lot more funding than the state institutions. Central institutions की funding बहुत अच्छी आती है. Okay, as compared to state universities. So that's why they are coming out with this idea that comparing state universities and central universities is unfair. क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. शॉर्टेज ऑफ टीचर. ओके, टीचर आपको मिलेंगे नहीं. ठीक है ना. शॉर्टेज ऑफ टीचर विल डेफिनेटली स्टेट यूनिवर्सिटीज में ज्यादा है. लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर. भाई स्टेट यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत पुराना होगा. ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दे डू फेयरली वेल. भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो बहुत अच्छे से पैसे मिलते हैं. दे हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. JNU गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, जामिया मिलिया इस्लामिया गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज फंडिंग इज प्रोवाइडेड. बट इफ यू कंपेयर इट विद से यूनिवर्सिटीज ऑफ हरियाणा और यूनिवर्सिटीज ऑफ पंजाब, यू कैन नॉट कंपेयर. इनको बिल्कुल भी हम कंपेयर नहीं कर सकते. ओके, सो इफ यू हैव सीन रवीश कुमार, ओके, लाइक NDTV जर्नलिस्ट, he started a series on working of these universities. Okay, Ravish Kumar, like he came out with a proper program explaining the severity of this
problem in the universities. भी यूनिवर्सिटी में कितनी बुरी हालत है. He was discussing things related to Bihar University, Patna University and all. So but it's a good thing to watch. आप जरूर देखना उसे, आप देख सकते हो. It will be available on the internet, YouTube as well. Okay. Now let's look into this editorial. What this editorial says. So this editorial says that the ranking of state-run and centrally funded universities ऑन अ कॉमन स्केल इज प्रॉब्लमेटिक. ओके, अलग अलग रैंक करो क्योंकि उनकी फंडिंग का फंडा अलग अलग है, एक साथ उनको रैंक हम नहीं कर सकते. सो दे आर सेइंग द रैंकिंग ऑफ स्टेट रन हायर इंस्टीट्यूशंस टुगेदर विद सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस. भाई सेंटर की यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, उनको तो बहुत पैसा मिलता है. ओके, लुक एट द बजट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ईयर मार्क द सम ऑफ 7,600 crore for IITs and other central universities. अब इतना ही अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए है, 7,600 करोड़ का बजट. ओके, इट इज नॉट द केस विद स्टेट यूनिवर्सिटीज. स्टेट यूनिवर्सिटीज को कुछ भी नहीं मिलता. ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट हियर. सो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट यू कैन नॉट कंपेयर देम. You cannot compare them. Okay, this is the argument that they are making. They should not be compared. Okay, they should not be compared. Definitely there are differences in the sense resources, infrastructure, and it is highly inadequate in the state run universities. State run universities के अंदर infrastructure जो है वो highly inadequate है. That's the important point here. Okay, so without recognizing this fact, it is unfair to compare them. Now you need to understand one thing. There is a study which points out few things. Okay, that financial resources are inadequate. It has been proven. ये तो हो गया. Look at the other issues that they are facing. Shortage of staff. State universities, they are not able to pay even salaries and pension of the teachers. Okay, अब आप teachers की salaries नहीं दे पा रहे हो, pension नहीं दे पा रहे हो, it impacts the quality. You seriously think that any teacher, any good quality teacher, any talented person, okay, will be interested in teaching in these universities? क्या इस यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा होगा टीचर जो पढ़ाना पसंद करेगा? That's the important point here. Okay, so if they are not able to pay the salaries and all, pension नहीं आ रही है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है ना. Other important thing, agencies, now these ranking agencies, they don't do cost to benefit analysis. एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि you have to look into the cost to benefit analysis. Okay, that students who are studying in state universities, there are high chances that they will remain in India. Okay, and that talent can be used for the development of India. भाई जो state university में रह रहे हैं वो इंडिया में ही रहेंगे. Other thing is that if you cover the good central universities, it has been seen students from those universities, they move out of your country. Okay, वो लोग foreign चले जाते हैं. So that's why they are saying that these agencies, they should look into cost to benefit analysis. भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट तो इंडिया से बाहर जाएगा और स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इंडिया में ही रहेगा. दे विल कंट्रीब्यूट टू इंडियन इकोनॉमी. ओके, दे विल कंट्रीब्यूट टू Indian economy only. That's the argument they are making. How valid is this argument? We have to debate this. Okay, see, if the students are moving out of your country, definitely they are moving out for better opportunities. कोई आपके देश से बाहर जा रहा है तो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहा है ना. इफ यू आर फैसिलिटेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी विद इन योर कंट्री, व्हाई विल दे मूव आउट? अपने घर से बाहर जाके रहना किसको पसंद है? ओके, सो दिस इज द पॉइंट आई एम मेकिंग. अपने घर में ही वो अपॉर्चुनिटी मिलवा दो आप. ठीक है, MIT जैसे इंस्टीट्यूशंस आपके पड़ोस में होने चाहिए. सो इट्स अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट. दे हैव द राइट. ओके, दे सी दैट दे हैव नो फ्यूचर इन इंडिया, दैट्स व्हाई दे मूव आउट. सो दिस इज द पॉइंट हियर. Other important thing that you have to look into, like there are 420 universities in India that are located in rural areas. Okay, definitely like resources are not available. Okay, state government, they are not serious about improving the infrastructure. Serious भी नहीं है वो इनको improve करने में. But still, people, students studying in those universities, they will remain in India. That's the point here. Okay, and when you are comparing them, it is unfair to compare those rural universities with the IITs and IIMs. अब आप वो comparison नहीं कर सकते हो. Okay, that's the point here. Now this ranking, it has 5 parameters: teaching, learning, research, resource,
okay, graduation outcome, outreach, inclusivity, perception. Now you tell me one thing, if faculty is not there, how will they improve all these parameters? भाई टीचर तो है नहीं, तो ये सारे पैरामीटर्स ठीक कैसे होंगे? लर्निंग कैसे कराओगे, पीएचडी कैसे बनाओगे, रिसर्च कैसे करवाओगे? प्रॉब्लम तो यही आती है ना यहाँ पे. सो स्ट्रेंथ ऑफ द टीचर दे आर ऑलरेडी डिप्लीटिंग. टीचर का स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है, ठीक है, ये रियलिटी है हमारे यहाँ पे. बिकॉज ओल्ड टीचर्स आर रिटायरिंग एंड देर इज लो रिक्रूटमेंट. पुराने वाले रिटायर हो रहे हैं और नए वाले किसी की भर्ती होती नहीं है. और गवर्नमेंट क्या करती है आजकल, कॉन्ट्रैक्ट पे लगाती है. ओके, सो दिस इज द एनवायरमेंट दैट इज गोइंग ऑन. कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स बनते हैं और कुछ भी नहीं होता. ओके, सो दिस इज द वैलिड प्रॉब्लम. नाउ अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू प्रोवाइड मॉडर्नाइजेशन टू द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. जो भी आपकी लेबोरेटरीज हैं उसको मॉडर्नाइज करना होगा. मॉडर्नाइज करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? इट विल रिक्वायर फंडिंग. बिना पैसे के मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा. दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू लुक इनटू. ओके, दिस इज द अदर एरिया दैट शुड बी फोकस्ड. नाउ स्टेट HI, like these institutions, they receive much less funds for these activities. आपको आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है, बट फंडिंग इज नॉट अवेलेबल. हाउ विल यू डू दैट? पैसा नहीं होगा तो फंडिंग कैसे करोगे? ओके, सो दिस इज द पॉइंट दैट इज क्रिटिकल. नाउ research publications I have already discussed. Okay, so like quality has really going down in this country. बहुत खराब क्वालिटी का रिसर्च होता है हमारे यहाँ पे. जो पीएचडी स्कॉलर्स आपको मिलेंगे, ओके, so there are some question marks over their research, whatever research they are doing. ठीक है ना? So we have to work on these areas. Okay, apart from that, state universities have to be, you can say, strengthened. You have to provide them with tools like artificial intelligence, machine learning. इन सब चीजों के अंदर भी ये सब रिसर्च भी होनी चाहिए. ठीक है ना? आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज में ये सब रिसर्च भी होनी चाहिए. That's the important point here. Okay, so this is why it is said that like it is unfair to compare them. They both have different challenges, they both have different weaknesses. So we have to make sure that those weaknesses, those challenges are addressed adequately and appropriately. सबका अलग अलग रोल होना चाहिए, तब जाके हम इस प्रॉब्लम को डील कर पाएंगे. ओके, so we'll move to the next part. A drug bust opens a can of bitcoins. Okay, so this is the new development. You need to understand one thing. There is no doubt about it that वी हैव टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि सारा ड्रग ट्रेड और ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें ही डीलिंग होती है. ठीक है ना? सो वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. दिस इज व्हाट हैज पॉइंटेड आउट. ओके, सो इलिसिट ट्रेड के अंदर आप क्रिप्टो करेंसी यूज करते हो. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रेगुलेट इट. वी कैन नॉट अलाउ द फ्री हैंड. ओके, सो दिस इज व्हाट इज देयर इन दिस. अदर देन दैट देयर इज नथिंग मच. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ एमजी नरेगा सीक्स 25,000 करोड़ मोर. अब देखो समस्या क्या हो रही है. एमजी नरेगा के अंदर 25,000 और मांग लिए. फर्टिलाइजर सब्सिडी इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ओके, ऑलरेडी हेल्थ बर्डन इज देयर. ऑल दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. सरकार की स्पेंडिंग बढ़ती जाएगी. नाउ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज गोइंग टू इंक्रीज. इट मीन्स दैट देयर विल बी डेफिसिट. आपके यहाँ पे डेफिसिट होगा. ओके, डेफिनेटली डेफिसिट तो होगा ही होगा भाई. स्पेंडिंग गवर्नमेंट की ज्यादा है, रेवेन्यू कम आएगा तो डेफिसिट होगा ही होगा. व्हेन दिस इज द सिचुएशन, इट मींस दैट इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन योर इकोनॉमी. आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स दे विल से दैट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सो मच, हाउ कैन वी कंपीट विद गवर्नमेंट. सरकार के साथ हम कैसे कंपीट करें, क्योंकि सरकार तो सब्सिडी देती है. सरकार सब्सिडी देती है मींस मार्केट को डिस्टॉर्ट करती है. आपकी सब्सिडी मार्केट को डिस्टॉर्ट करती है. मार्केट के अंदर प्राइस कैसे डिसाइड होता है? ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड. ओके, डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है ना? बट यहां पे तो जबरदस्ती सब्सिडी देके एक तरीके से प्राइस को चेंज किया जाता है. सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर. एमजी नरेगा के अंदर पैसा बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन इट. ओके, बट वी हैव टू एड्रेस दिस डेफिसिट एंगल ऑल्सो. इसको भी डील करना बहुत जरूरी है. ठीक है ना? सो सेंटर हैज सॉट 25,000 करोड़ मोर like to fund MG Narega because it is required as supplementary demand for grant. Okay, additional budget for MG Narega was among the most keenly awaited and it was definitely required because we know one thing that rural area, rural economy is under distress. एक तो ये कहानी है. Okay,
अदर इशू इज ऑफ इलेक्शंस। भाई इलेक्शन आने वाले हैं, कहाँ पे? पंजाब में, यूपी में। ओके, नाउ दीज आर एग्रेरियन स्टेट्स, यहां पे ज्यादातर एग्रीकल्चर का काम होता है। ओके, रूरल बेस्ड इकोनॉमी ज्यादा है। सो दिस इज द फोकस, दिस इज द फोकस, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैव टू इंक्रीज, उनको जरूर इसे इंक्रीज करना पड़ा, ठीक है ना। सो ये आपको समझना पड़ेगा। तो देर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। ओके, एक चीज, एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। सो वो सब इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। यू कैन नॉट सेपरेट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ओके, दैट्स द फोकस हियर। सो दैट्स व्हाई एमजी नरेगा का बजट इनको बढ़ाना पड़ा। नाउ देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, रूरल डिस्ट्रेस इज वन फैक्टर। ओके, दैट इन रूरल इंडिया distress is going on, demand for job is increasing. Okay, this Manrega promises 100 days of unskilled work for every household at the pay of about 210 rupees per day. This year center seeks to transfer 25,000 crore to national employment guarantee fund. Okay, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड के अंदर ये 25,000 करोड़ जो है वो ऐड, इसने इन्होंने एडिशनल ऐड करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट फर्टिलाइजर सब्सिडी इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके, वो भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। उसके अलावा सुनो, we already have to pay 53,000 crore towards the pending export incentives. अलग अलग schemes के अंदर we do give incentives to people, that is also pending here. Okay, food storage, the food ministry has sought additional 49,000 crore. So these are the additional burden that our governments have to deal this time. अब बात ऐसी है, फिस्कल डेफिसिट इज गोइंग टू एक्सीड। ओके, बहुत ज्यादा होने वाला है, दैट्स द ट्रबल हियर। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ फिस्कल डेफिसिट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट इससे इंपैक्ट होता है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ओके, सो वी हैव टू डील विद दिस, इसके साथ जरूर हमें काम करना पड़ेगा। इट वॉन्ट बी ईजी एंड आई एम टेलिंग यू लाइक इन द नियर टाइम इट वॉन्ट बी इवन फिजिबल। ओके, सो यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान, कुछ अच्छे से प्लान आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो हेयर वी हैव नथिंग, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ओके, सो थरूर मूव्स अ बिल फॉर परमानेंट हाई कोर्ट बेंचेस। ओके, सो ही इज सेइंग दैट permanent high courts, okay, he is saying that the capital cities they don't have high courts, some of the capital cities they don't have high courts. Okay, example आप देखिए यहाँ पे, so केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोवा, उत्तराखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़। okay, so their high courts are situated outside the city capital, state capital के बाहर जो है आपका वो एग्जिस्ट करते हैं, वो सिचुएटेड हैं। दिस इज द रीजन व्हाई शशि थरूर इज रेजिंग दिस प्राइवेट मेंबर बिल। व्हाट इज अ प्राइवेट मेंबर बिल? दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। अब प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है? प्राइवेट मेंबर बिल, बिल प्रपोज्ड बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर हु इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का हिस्सा नहीं है, वो रूलिंग पार्टी का भी मेंबर हो सकता है। ओके, वो रूलिंग पार्टी का भी मेंबर हो सकता है, वो ओपोजिशन का भी मेंबर हो सकता है, बस वो सरकार का हिस्सा नहीं है, मतलब वो मिनिस्टर नहीं है। ओके, सो इफ दैट मेंबर पुशेस अ बिल इन द हाउस, इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन द हाउस, इट इज टर्म्ड एज प्राइवेट मेंबर बिल। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्राइवेट मेंबर बिल की हालत क्या है इंडिया के अंदर? द क्वेश्चन इज वैलिड फॉर जीएस पेपर 2। ओके, because you need to understand in India, if you look into the data that is there, okay, नेहरूवियन एरा was the best। नेहरू जी के टाइम पे प्राइवेट मेंबर बिल को सीरियसली लिया जाता था। ओके, उस टाइम पे प्राइवेट मेंबर बिल को सीरियसली लिया जाता था। बट इफ यू लुक इनटू द प्रेजेंट मेंबर, ओके, आज आप देखिए आज की डेट में जो प्रेजेंट जो हालत है प्राइवेट मेंबर बिल का, इट इज नॉट टेकन विद दैट सीरियसनेस, उतने सीरियसनेस के साथ इसे नहीं लिया जाता है। वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स। ओके, शशि थरूर ही हैड अर्लियर प्रपोज्ड अ बिल रिगार्डिंग सेम सेक्स मैरिज, अगेन इवन द बिल वाज नॉट अलाउड टू गेट इंट्रोड्यूस्ड। ओके, इंट्रोड्यूस भी नहीं करने दिया गया था, ठीक है ना। वी ऑलरेडी नो दैट हाउ your government is taking decision, there is a single party, you can say majority, and definitely in that situation the private member bills raised by the opposition will find it difficult to be
सस्टेनिंग। ओके, उनके लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है पास करवाना। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम दैट इज देयर। सो ये एक हालत है जो आपको देखनी होगी, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इज देयर हियर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। सो अफगान ट्रक्स कैन कैरी इंडियन एड वाया पाकिस्तान। ओके, सो अगेन पाकिस्तान इज रेडी टू अलाउ दीज ट्रक्स, ठीक है। अदरवाइज होता क्या था, व्हाट वाज द अर्लियर अरेंजमेंट? सो वागा बॉर्डर, ओके, so we had this arrangement. Now Afghan trucks used to come to Vaga, okay, but in return either they had to go blank, या तो वो बिल्कुल blank जाते थे, okay, means without carrying anything, or they had to carry the Pakistani good, या वो पाकिस्तानी गुड लेके उनको जाना पड़ता था। This was the arrangement earlier. Indian goods were not allowed to be carried to Afghanistan via Pakistan. That was the situation. Okay, so right now because of say pressure from Taliban, because right now Afghanistan need humanitarian aid, खाना चाहिए उनको, and India announced that India is going to provide 50,000 ton of wheat. Okay, 50,000 ton wheat India provide कर रहा है as a humanitarian aid. By looking into these particular developments, Pakistan has allowed Afghan trucks to carry Indian aid via Pakistan. Okay, so this is the development, new development. Now you tell me one thing, like how this particular idea of providing humanitarian aid to say Afghanistan is going to help us. Okay, आप देखो goodwill it plays important role. हर जगह गुडविल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, योर सॉफ्ट पावर इट प्लेज रियली इंपॉर्टेंट रोल। आपकी सॉफ्ट पावर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड दैट्स द पॉइंट हियर। your soft power plays really important role, and if we are helping Afghan people, it is part of our soft power diplomacy. Okay, this is the point. ये सारी चीजें समझनी जरूरी हैं, ठीक है ना। other than that, let's move to next part now. Portion tracker data under the wraps. Okay, so government have spent near about 1000 crore 1000 crore खर्च करके ये पोषण ट्रैकर बनाया है, विच इज गोइंग टू गिव द रियल टाइम डाटा, ओके, रिगार्डिंग द न्यूट्रिशनल हेल्थ ऑफ आवर पॉपुलेशन। कि रियल टाइम डाटा देगा, आपकी पॉपुलेशन की न्यूट्रिशनल हेल्थ बताएगा। ओके, दिस वाज द फोकस हियर। नाउ डाटा हैज बीन कैलकुलेटेड बट इट हैज नॉट बीन मेड पब्लिक। जनता के पास उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। ओके, व्हाई डू वी नीड रियल टाइम डाटा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो रियल टाइम डाटा इज रिक्वायर्ड टू हैव अ रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग। ओके, अदरवाइज होता क्या है, आपने पॉलिसी बना दी, that policy that you are going to make without addressing the ground level issues, okay, it will not be effective. It is going to fail. जो policy ground level के according नहीं होगी वो तो fail होगी ही होगी, लिख के ले लो आप। okay, that was the major concern, and if the idea was that we will have real time data and the policy making will be strengthened by it, but the present picture is really sad that government is not releasing that data in the public domain. भाई आपने कलेक्ट कर लिया, उसको अपने पास रख के करोगे क्या अगर पब्लिक डोमेन में नहीं डाल रहे? ये समस्या जो है यहाँ पे बताई गई है, ठीक है ना। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम दैट हैज बीन पॉइंटेड आउट। ओके, सो अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट प्रिपेयर्ड फॉर एनी एस्केलेशन सेज द नेवी चीफ। ओके, सो अगेन डेफिनेटली लाइक दिस इज सेंट्रिक टू चाइना, कुछ भी हो सकता है वहां पे। ओके, लाइक सी लेन्स आर इंपॉर्टेंट, वी हैव टू प्रोटेक्ट आर सी लेन्स, बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देर इज अनदर टर्म दैट इज यूज दैट इन इंडियन ओशियन इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ओके, इंडियन नेवी इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अब ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्या होता है? देखो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। ओके, इफ देर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन, दैट इज वन पार्ट। अदर एंगल टू दिस इज दैट यू हैव डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज ऑल्सो। आपके यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट भी तो आपको करना है, वो भी तो आपको डील करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज अगेन इन दैट आवर नेवी हैज टू प्ले सम इंपॉर्टेंट रोल। आपके पड़ोसी हैं, उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। all your neighbors, all the you can say countries of the Indian or say Arabian Sea, they don't have the strength. There is no doubt about it. Okay, now other threat could be, there are new threats that are emerging, like we have Somalian pirates. Okay, भाई इस 21st सेंचुरी में भी पायरेट्स आ सकते हैं। सो सोमालियन पायरेट्स, अगेन इट्स अ थ्रेट। ओके, सो फॉर दैट इंडियन नेवी हैव टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल, एंड दैट्स व्हाई द कॉल हैज बीन गिवन दैट यू हैव टू
prepare yourself for any eventuality. Okay, right now we know that how China is extending, or you can say is working on expanding its naval fleet. China भी अपनी नेवी पे काम कर रहा है, हम भी अपनी नेवी पे काम कर रहे हैं. That's the point here. Okay, so this is sort of a competition going on between two countries. चलता रहेगा ये सब. Okay, so we'll move to the next part now. Cyclone Zaved is bring heavy rain to Odisha, Bengal and Andhra Pradesh. Okay, so in 2013 means there was one question. एक क्वेश्चन आया था regarding the naming of cyclones. 2013 means okay, cyclone की naming कैसे होती है? So that was the question. Now tropical cyclones are named to facilitate communication, okay, to reduce the confusion, because these cyclones they are extending to multiple countries. देखो बांग्लादेश से लेके इंडिया की पूरी कोस्ट तक ये आ सकते हैं. In the same way we have some things in Arabian Sea as well. For that, to facilitate the better communication, this naming mechanism was established. Okay, so names are usually drawn from a predetermined list. पहले एक लिस्ट तैयार होती है. These lists are prepared by tropical cyclone regional body, okay, responsible for this. Now across the world there are 5 such bodies. हम सिर्फ अपनी अपनी बात करेंगे इंडियन ओशन के अराउंड आसपास वालों की. So names are proposed to these bodies by national meteorological and hydrological bodies. भाई हर कंट्री की अपनी अपनी एक national meteorological body होती है. Like in India we have Indian Meteorological Department which is dealing with this. Okay, so our regional body is North Indian Ocean. Like there is a regional body for North Indian Ocean, and like in India we have Indian Meteorological Department. So names are suggested by our department. Okay, in the same way Bangladesh they have their department, they are going to suggest names. Say in China, they in say Pakistan there is a department, they are going to suggest names. Okay, so these names are suggested and a list is prepared, and out of that list the names are given. जितने भी साइक्लोन आएंगे उसी लिस्ट के अंदर रोटेशनल बेसिस पे नाम दिए जाएंगे. ओके, ये अरेंजमेंट हमारे पास अवेलेबल है. दिस इज द अरेंजमेंट दैट वी हैव. इट इज वेरी अनलाइकली द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अगेन. इस टाइप का क्वेश्चन शायद दोबारा कभी नहीं पूछा जाएगा. Okay, but still it was asked in 2013, so I thought that you should know about this arrangement. Okay, so other than that there is nothing much. कुछ खास नहीं है यहाँ पे. Okay, so this is the point here. Now shutterbug leads to a pretty find in Sikkim. Okay, so a new species has been found, like the name has been given, chocolate bordered flitter. This is the name of butterfly. Okay, so ये आपको थोड़ा याद रखना है. New species has been found in Sikkim. ऐसा होता रहेगा. More species will become. Okay, so whatever species are there in news, you will be knowing it. It should be part of your, you can say, notes. आपके prelims के notes का वो जरूर part होना चाहिए. This is the point here. ठीक है ना? So ये बात आपको समझनी जरूरी है. Now we'll move to the next news regarding the international relations. Okay, so we have this dedicated page for international relations. So let's look into this now. Vaccination key for battling the Omicron. This is what WHO is saying. बिना vaccination के आप इससे fight नहीं कर सकते. But how? See, everyone will give this particular suggestion: vaccinate करो. How? That's the important point here. Why I am saying this how point? When India and South Africa they approached WTO, okay, to waive the patent, to provide waiver to this patent. भाई कोरोना से related जितनी भी चीजें हैं, वैक्सीन, टेस्टिंग किट्स, एवरीथिंग, waiver should be given. Okay, waiver should be given so that mass production can be arranged, उसका mass production हो सके. Okay, this is the arrangement that India and South Africa both have requested to WTO. WTO has not taken any decision. Okay, there is no progress over it. Countries are not in favor of giving this waiver. देखो जो western countries है, they are saying that we have invested heavily in the research activity. How can the waiver be given? Okay, हमने जी research किया तो आप ये waiver मत दो. वो लोग ये बात कह रहे हैं. अब ये जो वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, ओके, नाउ इट इज सेड टू बी फ्रॉम अफ्रीका. ये अफ्रीका का वेरिएंट हो सकता है. नाउ द पॉइंट हियर इज दैट लुक एट द सिचुएशन ऑफ अफ्रीकन नेशंस. ओके, they are poor. Apart from South Africa, rest all are poor. They can't afford vaccination.
दे डोंट हैव द रिसर्च कैपेसिटी, उनकी रिसर्च भी वो नहीं कर सकते, ओके, कि वो अपने यहाँ पे वैक्सीन इन्वेंट करेंगे. दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन राइट नाउ. So in that situation, it was definitely required that this WTO waiver should have been given to patent, so that countries like India, they could have increased the production of vaccine at a mass scale. भाई पूरे वर्ल्ड के लिए हमें वैक्सीन बनानी है, ये हम जरूर कर सकते थे, बट दिस हैज नॉट बीन डन. ओके, दिस हैज नॉट बीन डन. दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव. Now, other idea that Sri Lankan executive killed in over the blasphemy in Pakistan. Okay, see, you need to understand this is the sad picture of radicalization in Pakistan. See, I have studied the whole issue. बहुत छोटी सी बात थी. This Sri Lankan executive, he just told one पेपर, ओके, एक पोस्टर लगा हुआ था, ठीक है ना, देयर वाज वन पोस्टर, दैट पोस्टर वाज रिमूव्ड बाय दिस श्रीलंकन एग्जीक्यूटिव. ही वाज वर्किंग देयर, ही वाज डूइंग हिज बिजनेस इन पाकिस्तान. एक उन्होंने एक पेज फाड़ दिया एंड इट बिकेम अ बिग इशू. ओके, इट बिकेम अ बिग इशू because on that poster was associated with one of the Islamist party. Okay, so एक इस्लामिक पार्टी है वहां पे, तबलीके लबैक पाकिस्तान. ओके, तबलीग लाइक तहरीक लबैक पाकिस्तान. ओके, तहरीक लबैक पाकिस्तान, दिस इज द पार्टी. सो ऑन दैट पोस्टर दे वर यूजिंग सम कुरानिक वर्सेस. ओके, कुछ कुरान की आयतें जो हैं उस पोस्टर के ऊपर उन्होंने यूज की थी. फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल पार्टी अगर वो चीजें लिखेंगे वहां पे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. अब कोई भी उस पोस्टर को लाइक रिमूव कर सकता था, थिंकिंग दैट दिस इज द पोस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी. सो दिस इज व्हाट ही डिड. So he removed the poster from the wall and this created a whole trouble in Pakistan and he has been lynched by a mob. Okay, so this is what radicalization can do and how this is how it can be dangerous. ये radicalization आपके साथ कर सकता है और ये बहुत dangerous हो सकता है because it somehow facilitates mobocracy. तो पाकिस्तान तो मोबोक्रेसी बन रहा है, डेमोक्रेसी तो वो दूर की बात है, ठीक है ना. सो दिस इज द सिचुएशन दैट वी हैव हियर. So if you look into other news, so Taliban chief like decrees ban on forced wedding in Afghanistan. Okay, so this is what he is doing. So like this is showing that Afghanistan, the Taliban is showing some responsible signs that it will act in a responsible manner. It will address the rights of minorities. Okay, so इस type का ये arrangement है. So other than that there is nothing much here. So we'll move to the next page now, that is your economy page. Okay, so Australian wine may land ahead of the free trade agreement, this is what is said. So ये कुछ चीजें हम करने वाले हैं, import करेंगे यहाँ पे, like we are already in process of signing the free trade agreement with Australia. If this agreement is signed, okay, definitely there are good chances that our bilateral trade is going to increase. Now Australia also needs India. You need to understand one thing, why I am saying this, because Australia is the victim. Okay, Australia is the victim of weaponization of trade policy followed by China. चाइना ने अपने ट्रेड को एज अ वेपन यूज किया है एंड ऑस्ट्रेलिया इज अ विक्टिम. सो इन दिस वे ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली आर Australians are looking forward to reduce their dependence on China. They want to reduce their dependence on China. Okay, so this is the development which is going on. ठीक है ना, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा. You have to keep an eye over it, whatever future developments are made regarding India-Australia relations. Okay, so we'll move to the next news, that is regarding survey suggests fastest services growth since 2011. Okay, so one thing is for sure, the whole Indian market is becoming digital now. पूरी इंडियन मार्केट एक तरीके से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ गई है, ठीक है ना. तो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट आईटी सर्विसेज तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी आपके यहाँ पे. आईटी तो गेन करेगा ही करेगा बिकॉज ऑफ द डिजिटल मार्केट दैट वी आर डेवलपिंग हियर. ओके, सो दिस इज द न्यू थिंग दैट इज गोइंग ऑन. ये नई चीज है. दिस इज द सर्वे, द रेट इज रियली हाई. Now what is the problem with this service market? सर्विस सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सर्विस सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इट इज स्किल इंटेंसिव. ओके, इट इज स्किल इंटेंसिव. सो problem with this is that you cannot provide skill to all the people, all the youngsters of your country. हमारे यहाँ पे यूथ जो है वो सेमी स्किल्ड जॉब्स तो कर सकता है,
मैं ये नहीं कह रहा आप सबको आईटी इंजीनियर बनाओ, लेकिन 10th पास आदमी एक मशीन तो चला सकता है. सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर. सो वी शुड नॉट बी टू मच हैप्पी अबाउट दिस ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर बिकॉज इट इज स्किल इंटेंसिव. देर इज अ लिमिटेशन ओवर जॉब क्रिएशन. कितनी जॉब्स आप बनाओगे, कितने आईटी इंजीनियर्स बनाओगे? ओके. So you cannot avoid your manufacturing sector, because that sector is going to make sure that your semi skilled labor, they will get the jobs. Okay. So वो सारी चीजें आपको समझनी है, ठीक है ना? So this is there for us in this particular session. uh, like Anil, like Mr. Mukesh Ambani, he is really optimistic about the blockchain technology. Okay, काफी अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं. So there is nothing much here. So we have to end the session now. ठीक है. So this is what we had in today's newspaper. So that's it for the day then. Thank you very much. So again, I'm telling you, you can join us at 7 p.m. with Business Line newspaper.